guys, welcome to our YouTube channel. In earlier videos we discussed about what is a force, what is a pushing force and what is a pulling force, and we discussed how do we decide whether it's a pulling or a pushing force. Then we entered into our fundamental forces in nature, in which we talked about the gravitational force, the electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force, and we discussed in detail about the gravitational force. Now we will discuss about the electromagnetic force or the EM force. So let's get started with this topic. So electromagnetic force, as the name suggests, it is a force which deals with the electric phenomena and the magnetic phenomena simultaneously. Either it can deal with electric phenomena, or it can deal with magnetic phenomena, or it can deal with electric and magnetic phenomena at the same time. Electromagnetic force is the force between charged particles, be it like charges or unlike charges, be it charges on rest or charges in motion, be it in uniform speed or with accelerated motion. मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तब अराइज होती है जब हम दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन स्टडी कर रहे होते हैं. अब वो चार्जेस रेस्ट पर भी हो सकते हैं और दे कैन बी इन मोशन, वो मोशन में भी हो सकता है. और मोशन में भी दो सिचुएशंस है कि वो या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहे हों या फिर वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हों. तो हर केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अराइज होती है. अब जब हम सबसे सिंपलर केस लेते हैं, वो होता है कि हमारे जो चार्जेस हैं, इंटरेक्टिंग चार्जेस हैं, दे आर एट रेस्ट. तो उस केस में जो फोर्स अराइज होती है, दैट इज कॉल्ड द कूलम फोर्स. ओके, सो कूलम फोर्स अराइजेस when two particles having charges q1 and q2 are at rest with respect to an observer. मतलब जब एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो दोनों चार्जेस रेस्ट पे हैं, तो जो फोर्स अराइज होता है उसको हम कूलम फोर्स कहते हैं, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम कूलम लॉ के थ्रू देते हैं. एंड कूलम लॉ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल in the first chapter of 12th physics, that is electrostats. Here we are going to just see the formula and its basic applications. Okay, so let's see what is Coulomb's law. So according to Coulomb's law, F is equals to K Q1 Q2 by R square, where K is 1 by 4 pi epsilon naught and value of K is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. Okay, so here epsilon naught is the permittivity of free space and its value is 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square by Newton meter square, and it's a constant and K is also a constant, and Q1 Q2 are the magnitude of charges on the particles and R is the distance of separation between the two charges. Now how do we decide whether the force will be attractive or repulsive? So if both the charges are like charges, means both are either positive or negative, then the force is repulsive force. Okay, and when these are unlike charges, means one is positive and the other is negative, then the force arises is the attractive force. So this is the very basic knowledge about the Coulomb's law. And due to this Coulomb force or the electrostatic force, we see that the small pieces of paper gets attracted towards the comb when we comb our hair, dry hair, and then we place the comb near the small pieces of paper, then it's get attracted. It is due to only this force. Then unlike charges develop on the comb and the pieces of paper, and the pieces of paper gets attracted towards the comb. So this is the reason why that phenomena happens. This is the case when the interacting charges are at rest, but when the interacting charges are in motion, in uniform motion, means they are moving with uniform speed, then another force arises, that is called the
magnetic force and the field arises which is called the magnetic field. This we will study in 12th, of course. The whole electromagnetism unit comprises the electrostatic force, the magnetic force, the electromagnetic waves, alternating current, and so on. So we will study in detail about that in further classes. Actually, electric aspects and the magnetic effects, electric and magnetic effects are in general inseparable. वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, हम उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये इलेक्ट्रिक का ही काम है और ये मैग्नेटिक फील्ड का ही काम है. दे आर इनसेपरेबल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक पूरा एक कंबाइंड यूनिट होता है, ठीक है. कहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जाता है, कहीं पर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बट दे आर हाईली इंटरलिंक्ड. और वो जो फोर्स से लिंक्ड होते हैं उसको हम लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. सो बेसिकली just want to say this, that electric and magnetic effects are inseparable, and electromagnetic force, just like gravitational force, can act over large distances and it does not need any intervening medium. It can act in vacuum also and it can act in normal medium also. So it doesn't require any intervening medium, and it is very large in magnitude as compared to the gravitational force between the normal objects. You can just compare it like this: the electromagnetic force or the electrostatic force in case of 2 protons is nearly 10 to the power 36 times the gravitational force for any fixed distance. मतलब अगर हम दो प्रोटॉन्स को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हैं तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और उनके बीच का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अराइज होता है, जो कि उस केस में कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, दैट इज 10 to the power 36 times the gravitational force. Can you see the enormous difference in this? Now the question that must be arising in all of your mind and my mind also is, why we say generally that gravitational force is appreciable at the terrestrial or the astronomical or celestial scale, while electromagnetic force in general is appreciable at the atomic and molecular level. Why is that so? अब सबसे पहली बात तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है और जो वीक फोर्स होता है वो न्यूक्लियर लेवल पे ही देखे जाते हैं, वहीं पर ही उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. तो नॉर्मल हमारे लेबोरेटरी स्केल, टेरेस्ट्रियल स्केल या एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्केल पे हम मोस्टली 2 फोर्सेस के साथ डील करते हैं, एंड दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो अगर हम जनरली बात करें तो हमारे आसपास का जो भी मैटर सराउंडिंग है, जो भी हमारी आसपास की चीज़ें हैं, जो सब कुछ है, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है. अब न्यूट्रल होने का मतलब क्या? मोस्टली जो भी हमारे आसपास के सब्सटेंसेस होते हैं, मैटर होते हैं, उन सब में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल अमाउंट में होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर दी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स आर दी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. ओके, सो जो भी हमारे टेरेस्ट्रियल लेवल पे जो भी सारी चीज़ें होती हैं, उन पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस होता है. तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से जो भी उस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कांटेक्ट में नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस विच द पार्टिकल्स विच आर नॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर. ओके, सो मार्क माई वर्ड्स, विच आर नॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि इसका यूज़ आएगा आगे कि कांटेक्ट फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ऐसे दो पार्टिकल मैटर, एक सब्सटेंसेस जो कि आपस में न्यूट्रल हैं, वो न्यूट्रल हैं, तो एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से इक्वल रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा नियरली. सो उस पर जो नेट फोर्स आएगा, नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन दैट केस वुड बी 0. तो वहाँ पर
जो हमारी नॉर्मल सराउंडिंग्स में है वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो गया, बट क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नियरली ज़ीरो हो जाएगा। तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्रिशिएबल हो सकता है, ठीक है। और अप्रिशिएबल होता ही है जब हमारी एक बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इट्स साइज इज़ वेरी लार्ज। लाइक अगर हमारे तरफ एक तरफ अर्थ है और एक तरफ हम हैं, तो हमारे ऊपर अर्थ के थ्रू जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज़ अप्रिशिएबल, जिसको हम वेट बोलते हैं। तो और बाकी केसेस में भी जहाँ पर हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ डील कर रहे होते हैं, वहाँ पर नियरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से केवल ग्रेविटेशनल फोर्स आता है और वही सारी चीज़ें डिफाइन करता है उस पॉइंट पे। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट्स द टेरेस्ट्रियल फिनोमेना। एंड नाउ लेट्स सी वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट्स द atomic or molecular phenomena. We have already discussed about it earlier in our previous video, but let's discuss it again in very simple language. So जो atomic और molecular scale होता है उस पर हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ डील कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स तो अपने न्यूक्लियस में होते हैं, तो उनके साथ हम ज़्यादा डील नहीं करते। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उनका मास इज़ वेरी लो, मतलब 10 to the power minus 31, 10 to the power minus 27 kg की टर्म्स में होता है। तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, बट वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू काफ़ी अप्रिशिएबल होती है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वेरी वेरी डोमिनेटिंग देन दी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वी से कि electromagnetic force dominates the atomic and molecular scale phenomena, and that is the reason why electromagnetic force play a very important role in the formation of molecules, electromagnetic spectrum and so on. So this is the reason why electromagnetic force dominates at the atomic and molecular level, while gravitational force dominates at the terrestrial and celestial or astronomical level. So, apart from the atomic and molecular phenomena, electromagnetism also plays a very important role in the origin of derived macroscopic forces like the spring force, friction, tension, or normal contact force. And the origin of these kinds of derived forces is rather a complicated one, but we will try to understand it in a very basic and simple manner. Okay, so we will study first about the contact forces between two surfaces. Just assume a book is placed on a table. Okay, now the particles of the book, the atoms of the book are in contact with the atoms of the table. So there will be some kind of electric interaction between the atoms. Atoms in the sense the electrons and the protons of the atoms. So there will be some electrostatic interaction between these two surfaces. So it will result in net repulsion or net attraction between these two surfaces, and in this case it's the repulsive type of force, means it will try to push the other body, like the table will try to push the book in upward direction and the book will try to push the table in the downward direction. So just see how this happens. So see, this book is placed on a table, so these particles of the books are in contact with the particles of the table, so it will result in net repulsive force. So on the book it will act in upward direction and on table it will act in downward direction. So it's actually a pushing force and it arises due to electromagnetic interaction between the two surfaces. So this is the normal contact force. This is the normal contact force. This is the case when the surface is smooth or frictionless, means
only the force which can be applied on the book by the surface of the table can only be in perpendicular direction to the table, perpendicular direction to the contacting surface. But when there is rough surface or friction, then a parallel force can also act on the body. It is known as the friction, or it can be called the horizontal component of the contact force. I'm not saying normal contact force, I'm saying contact force, because contact force is the net resultant of the horizontal and vertical component. The vertical component is the normal contact force and the horizontal component is the frictional force. As the friction and the normal contact force are acting in perpendicular direction, so the net resultant contact force can be given as under root of F square plus R square, where F is the frictional force. So friction will be only in observation when the surface is not smooth, when the surface is rough or has some kind of coefficient of friction value. Okay, so now let's see how electromagnetic force plays a role in tension force also. So let's see what happens there. See, when we tie a rope or a string to a block and fix it to the ceiling, then the string comes in a state of tension. So what happens here, the particles near to the surface, contacting surface, is interact with each other. These are the particles of rope and these are the particles of the object. So they interact with each other, means their electrons and protons starts interacting with each other, and there is net coulombic force or electric force which is responsible for pulling up the block and helps in keeping the block in this position, means it provides a pulling force which helps in balancing the weight of the block. So here tension comes upward and this is a pulling force and it helps in balancing the magnet mg. Okay, so here what happens, it's net attractive force. So when we attach a string to a block and fix it to the ceiling, then the particles near the surface, contacting surface where the string is attached to the block starts interacting with each other, means the atoms there have electrons and protons which starts interacting with the atoms of the object or the block, and it results in a net attractive force which helps to pull the block to balance the gravitational force. Okay, so this happens in case of tension, when the string or rope is in a state of tension. Similar thing happens in case of spring. So when the spring is in natural length position, means when there is no horizontal force acting on the spring, then the spring is said to be in state of natural length, means it's neither stretched nor compressed. But when we try to stretch it or compress it, then there is a net force which starts acting on the object. Okay, so when you try to compress the spring, then spring will try to push your hand or the block which is trying to compress the spring, in which it tries to push, means it will throw you away from it. Means when you compress the spring, then the spring force act away from its center, and when you try to stretch the spring, then the spring force will act towards the center of spring. So this is all about the electromagnetic force, and we will study more about tension, friction and spring force in our further videos, in which we study about the Newton laws of motion
and friction and work power energy. Then we will study about these kinds of forces in detail. And in our next video, we will deal with the nuclear forces. So now you can understand the importance of this electromagnetic force. For example, when we stand on the ground, that is on the earth's surface, then our weight is acting downwards. And as we are standing on the ground, there is a contact between our feet and the ground, so there is normal contact force. So this normal contact force is balancing our weight, which is the gravitational force due to our massive earth. So you can see the magnetic force, the electromagnetic force is balancing the force due to this massive object earth. If there were no electromagnetic force, then we could have crumpled under our own weight. So you can see the importance of this electromagnetic force now. So this is all for today. In our next video, we will continue from strong nuclear force and weak forces.